Good morning, team. Tata Motors JLR number in UK came, where the sales is down by 12.5% year-on-year basis. In December month, they have sold 3,501 unit there. US employment data came very good, but very good data is very negative for market because Fed will hold on to its interest rate hike theory. So no, this is something where the US market corrected yesterday overnight. So no, this is something to watch out for. In Reliance, crude prices are coming down. Even China refiners are selling their product overseas because of lack of demand in China. So this is putting pressure on GRMs. That is why Reliance has been correcting of late. But I think at certain level, it will stabilize. Godrej Agrovate, the company will be setting up an edible oil processing plant in Khammam district in Telangana with an investment of 250 crores. The facility to process palm oil 30 tons per hour, which can be expandable to 60 tons per hour, will be implemented. And this is the largest investment in Khammam, is what the news report is saying. Ujjivan Small Finance Bank, they reported a business update where their loan book has increased by 33% at 21,895 crores. So, a quarter-on-quarter basis, the growth is 5%. Deposit grew by 49% to 23,154 crores. And quarter-on-quarter basis, it is a 14% higher, and gross NPA also dropped to 3.3%. So Ujjivan Small Finance, I think the update is very positive. ILF, India Infoline Finance, IIFL Finance, to rise up to 1,000 crore via secured NCD offering. The yield will be 9%. RHI Magnesia to acquire Indian refractory business of Dalmia. So this was announced long back, but now in the exchange they have announced the nitty-gritty where it will be a share swap ratio where share value 1,708 crore will be swapped, and RHI Magnesia will also consolidate the debt. So, Dalmia refractory, they have a debt of 443 crores, which will come into the books of RHI Magnesia. With this deal, I think it is very positive for RHI Magnesia. Life insurance companies are doing very good. So, irrespective of market reaction, I think HDFC Life, SBI Life, ICICI Pro Life is still looking good. And they are moving against the trend. Even Bharat Forge is one stock which is moving against the trend. So I think as the budget is nearing, very soon the budget related, defense related stock will start moving higher. So these are few things to concentrate on. Even banking stock, larger banking stock like Bank of Baroda, Canara Bank, Federal Bank, Axis, they are looking good. So something like that you can do it. But HDFC Bank and ICICI is not performing up to the mark. But we need to wait and watch there. So there are, because we are in a new year, there is a sector rotation. And this time it is life insurance which is taking the lead, is my feeling. But time will tell. But even Max Financial Services is one more stock to look out. With that, over to you, Kshitija. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी हम लोग ये कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं. सो फर्स्ट अपडेट है कि कारा के जो नंबर्स आए थे दिसंबर मंथ के कल, तो उसमें 2 मंथ का जो फेस्टिवल सीजन था अक्टूबर और नवंबर, उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया था. बट उसके बाद जो दिसंबर नंबर्स थे, रिटेल ऑटोमोबाइल सेल्स इंडिया में 5% डिप देखा गया दिसंबर में. बेसिकली ये डिक्लाइन दिखा गया है क्योंकि टू व्हीलर्स में डिक्लाइन आया है सेल्स में 11% से
गिरा है। देन उसके बाद उसके अदर जो कैटेगरीज है वो ग्रीन में है। बट हम लोग कंपेयर करेंगे प्री कोविड मंथ से दिसंबर 19 ईयर में, तो टोटल व्हीकल सेल्स वाज डाउन था -12% से। और अभी भी इधर वो ड्रैग हुआ था बेसिकली टू व्हीलर के नंबर से, तभी वो फेल हुआ था -21%। सो और ओवरऑल हम लोग देखें तो कैलेंडर ईयर 2022 में टोटल व्हीकल का जो रिटेल ग्रो हुआ है 15% ईयर ऑन ईयर, बट वो फेल हुआ है -10% फ्रॉम प्री कोविड ईयर ऑफ 2019। बट हम लोग बुलिश है पीवी सेगमेंट में ऑटो के ऊपर, सो उसमें से हम लोग महिंद्रा स्टॉक पसंद है, और एंसिलरीज में एसजीएस एंटरप्राइजेस एंड सोनोकॉम स्टार। देन नेक्स्ट अपडेट है कोल इंडिया के ऊपर। कोल इंडिया की जो कंपनी है उन्होंने रजिस्टर ग्रोथ की है 10.3% प्रोडक्शन का ईयर ऑन ईयर में, और टोटल कोल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है 10.81% से 82.87 मिलियन टन है। देन लार्सन एंड टुब्रो की जो सब्सिडरी कंपनी है एलएनटी रियलिटी डेवलपर्स, वो अग्रीमेंट में एंटर करने वाली है, और वो सेल स्टेक करने वाली है। उनका एंटायर स्टेक था 99% का थिंक टावर डेवलपर्स में, और ₹1 लाख प्राइस में। द नेक्स्ट अपडेट है एस्टर डीएम हेल्थ केयर कंपनी है, उनके जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है श्रीनाथ कोच्चा रेड्डी, उन्होंने रिजाइन किया है उनके पोस्ट से, और वो इफेक्ट हुआ है कल से जनवरी 2023 से। देन रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी है, उन्होंने फुटबॉल जो क्लब है मैनचेस्टर सिटी, उनके साथ पार्टनर किया है जियो ने प्लेटफॉर्म ने, और ये सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म। सो लेटर वो क्लब ऑफिशियल मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क पार्टनर करेंगे इंडिया में। देन पोकर्न है जो यूएस डिपार्टमेंट कॉमर्स रूल कंपनी सब्सिडरी पोकर्न इंजीनियर स्टोन लिमिटेड, उन्होंने जो उनका जो सेल्स सब्जेक्ट मर्चेंडाइज है उसमें लेस देन नॉर्मल वैल्यू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ December 13, 2019 से लेके थ्रू May 31, 2020 में था, जो नॉन वोलेटिंग एंटी डंपिंग रेगुलेशन किया है। नेक्स्ट अपडेट है आरएचआई मैग्नीशिया के ऊपर। बोर्ड ने अप्रूव दिया है कि उनका जो एक्वायरिंग था दलमिया ओसेल, जो दलमिया भारत रिफ्रैक्शनरी है, वो शेयर स्वैप के लिए, और कंपनी अलॉट करेंगे 2.7 करोड़ शेयर्स, और इश्यू प्राइस होगी 632.5 पीस। जो डीबीआरएल एक्सचेंज में 8.25 करोड़ शेयर्स होंगे। तो ये पॉजिटिव अपडेट है आरएच मैग्नीशिया के ऊपर। देन नेक्स्ट अपडेट है मुकुंद जो कंपनी उन्होंने कंप्लीट किया उनका सेल्स 45.94 एकर्स लैंड थाने में, और जो महाराष्ट्र एजीपी डीसी इंफ्रा 2 है वो 796.46 करोड़ में। देन महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो सब्सिडरी कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा साउथ अफ्रीका, उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि वो स्टेप डाउन हो रहे सब्सिडरी महिंद्रा वेस्ट अफ्रीका से, और वो डिसॉल्व हुआ है Jan 4, 2023 से कॉर्पोरेट अफेयर्स कमीशन नाइजीरिया से। देन नेक्स्ट अपडेट है गोदरेज प्रॉपर्टी ने सेल किया हुआ है 1 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया। उनका जो लॉन्च न्यू प्रोजेक्ट था केलिस्टी इन टाउनशिप गोदरेज गार्डन सिटी अहमदाबाद में। देन हीरो मोटो के जो प्रमोटर है पंकज मुंजल, उन्होंने सोचा है कि वो इन्वेस्ट करेंगे अराउंड 1500 करोड़ नेक्स्ट 3 इयर्स में, और जो स्ट्रेंथन करेगा उनका जो प्ले है पर्जनिंग मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपोनेंट्स में, और इसके अलावा डेवलप करेंगे ओवरऑल वर्ल्ड में और नेशन में जो और वो आइसोलेटेड भी करेंगे जीरो एमिशन व्हीकल्स जो एनवायरमेंटल के कंसर्न है। तो नेक्स्ट अपडेट है बीएसएनएल अभी 5G सर्विस में 2024 में कमेंस करेगा। तो उसमें यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कल बोला कि बीएसएनएल उनका जो 5G सर्विस है प्रोवाइड करना वो स्टार्ट करेंगी 2024 में, और कंपनी ने शॉर्टलिस्ट किया है TCS एंड C.Lead जो कॉन्स्ट्रीम है जो रोलिंग आउट करेंगी 4G नेटवर्क, और वो अपग्रेड करेगी 5G अबाउट 1 ईयर में, और जो प्लेसिंग ऑर्डर है वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट में है। देन नेक्स्ट अपडेट है इंडसइंड बैंक और ब्रिटिश एयरवेज एग्जीक्यूटिव क्लब और कतार एयरवेज प्रिविलेज क्लब, उन्होंने थर्सडे को अनाउंस किया कि वो पार्टनरशिप साइन कर रहे हैं, और वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मल्टी ब्रांड क्रेडिट कार्ड जो पावर्ड बाय होगा वीजा से। देन हॉलीवुड स्टूडियो लायंस गेट उन्होंने पार्टनर किया है पीवीआर पिक्चर्स के साथ, जो रोल आउट करेंगे इनका 2023 का
थिएटरिकल कंटेंट इंडिया में जो पार्टनरशिप होगी, जो मतलब पार्टनरशिप बेसिकली लाएंगी मूवीज। लाइनअप है उसमें इंक्लूड है प्लेन, जॉन विक चैप्टर 4 एंड अदर्स। देन नेक्स्ट अपडेट है टाटा मोटर्स के जीएलआर के नंबर्स हम लोग देखे थे, वो डाउन हुआ है। सेल्स उनका कुछ अराउंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन आया है, और जो उनका यूनिट सेल हुआ है वो 3500 यूनिट्स के अराउंड ही हुआ है। तो नंबर्स टाटा मोटर्स ज्वेलर्स के इतने अच्छे नहीं आए। देन यूएस एम्प्लॉयमेंट का डेटा आया, तो वो डेटा हायर था, तो उसमें कल यूएस के जो एक्सचेंज में कल करेक्शन देखा गया है, तो ये वॉच आउट करना जैसे होगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट मार्केट में होगा। देन नेक्स्ट अपडेट है गोदरेज एग्रोवेट, उन्होंने एडिबल ऑयल सीड का प्लांट तेलंगाना में सेटअप करने का सोचा है। उसका कुछ 250 करोड़ का अराउंड इन्वेस्टमेंट है। देन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की प्रोविजनल नंबर आए थे, उसमें लोन बुक उनका ग्रो हुआ है 33% से, और ग्रोथ हुआ है 5% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर। डिपॉजिट में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 14% की ग्रोथ देखी गई है। उनका ग्रॉस एनपीए वो ड्रॉप हुआ है 3.3% से। तो ओवरऑल ये नंबर्स थे वो पॉजिटिव आए हुए हैं। देन आईएफएल जो कंपनी है वो रेस करने वाली अराउंड कुछ 1000 करोड़ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर से, और उसका यील्ड है 9%। देन नेक्स्ट अपडेट है जो लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें एचडीएफसी लाइफ है, एसबीआई लाइफ है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, और ये स्टॉक जो अगेंस्ट जो ट्रेंड है मार्केट का उसके अगेंस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। भारत फौज भी उसमें है, जो ये स्टॉक मूविंग हायर चल रहे हैं। बहुत ही जल्द जो डिफेंस रिलेटेड स्टॉक है, बजट रिलेटेड स्टॉक है, वो परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। इवन बैंकिंग स्पेस में बीओबी, कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक अच्छे लग रहे हैं। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक इतना कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। तो सेक्टर में लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर अभी लीड ले रहा है, तो आप वो सेक्टर के ऊपर ध्यान दे सकते हो। इसके अलावा एमएफएसएल भी स्टॉक हम लोग को अच्छा लग रहा है। Technical and derivatives outlook. So in yesterday's session, we saw that Nifty there was some amount of decline and it made a low of 17,892. Net the close was at 50 points lower and this came almost close to 18,000 level. So what we is observing over the last 26 trading session, there has been correction in the market, but the pace of the correction is very slow. So nearly from the of 18,887, the market has corrected 6%. So at currently in the recent last 3-4 sessions, what we are observing 18,300, the range of 18,300 to 18,200 is acting as a resistance, mainly because this 18,300 is the 50-day moving average. So even yesterday when the market corrected, the bounce was there from the lower level. So for the next few session, we believe this Nifty will be in a trading range of 18,300 to 17,800. So this would be the range. Only when this we see a very strong breakout above 18,300, then there will be a fresh strong upside momentum, which will take the market by another 5-6% on the higher side. But we need to wait for the 18,300 close on the strong notes. The same with the bank nifty. The bank nifty eventually for the last couple of days, 43,000 was the level which it was holding, but yesterday it broke that and it has made a low at 42,298. The close is 42,608. So I believe the bank nifty will again see momentum as and when it crosses 43,000, and the technical trigger for the bank nifty is 43,600. So the net for both the indices, we are expecting a range bound kind of move with limited downside. This entire structure is more of a like a time wise correction. We are not going to see any sharper correction in the market. So whenever there is an upside trigger and breakout, I think we will be heading for the fresh upside, but then we need to wait for that confirmation. So till then, it's a range bound kind of a market. Sector specific yesterday, FMCG, oil and gas, auto, and pharma were the ones which showed the strength, whereas the weakness was seen in the private banks and IT counters. For today's session or maybe for the next couple of days, I think capital goods, where in that APB and Siemens are looking positive, and we also need to keep a watch on the metals and chemical space. Coming to derivatives report.
So in yesterday's session, Nifty futures saw a short built up to the tune of 0.32%, which was the addition of 0.04 million shares. So total outstanding position in the Nifty future is 12.59 million shares. The put call ratio also is now trading at 0.75, which is below 1 ratio. So major additions were seen in the put option front at 17,800 and 18,000 strike price. So that should act as a support. And in the call front, 18,000 and 18,100 call option. So that should act as a resistance. Coming to Bank Nifty also seen a short build up in yesterday's session from the derivatives point of view. So it was the OI was like 2.99%, which was the addition of 0.07 million shares. The major additions were seen in the put options at 42,000 and 42,500. So this should be the support from the derivatives point of view. On the higher side, 43,000 and 42,800 call options saw a significant built up in open interest. So this should be the resistance. So the net that should be the range for the Bank Nifty. Coming to FI data, FI is specifically in the index future, they have bought 16,000 contracts and they are net short by 25,000. So the long short ratio is little bit improved from 37% to 41%, which is a positive side. So I believe we are in a range bound kind of market, and for the day specific, we should be respecting 18,000 level, and some bounce is expected during the day. So that's all from my end. I'll hand over to Devang sir for more research updates. Thank you, Brijesh sir. Good morning, all. So I would take you through the fundamentals. So FADA has released the retail sales numbers for month of December yesterday. After 2 months of festive season, the positive impact in October and November, retail automobile sales in India saw a 5% dip in December 22. This is mainly due to decline in two-wheeler sales by 11%. So when compared to pre-COVID month of December 19, the total vehicle retail was down 12%. The main primary fall was because of two-wheelers, which fell minus 21%, and all other categories have closed in green. The total retail vehicle sales grew by 15% YOY, and it has fallen by 10% from pre-COVID of 2019. We remain bullish on PV segment of auto, and within that we like Mahindra, and in ancillaries we like SJS and Sona Comstar. The other news are on IDBI. SEBI has allowed classification of government stake as public shareholding after divestment of the bank. The Coal India, the company has registered a growth of 10.3% in production on year, while India's total coal production has increased by 10.81% to 82.87. This bodes well for Coal India. Larsen and Tobro, the company subsidiary L&T Realty Developers, has entered into an agreement to sell entire stake of 99% in Think Tower Developers for rupees 1 lakh. This is not a major thing. In terms of Aster DM Healthcare, the company's CFO has resigned effective from Jan 5, 2023. In terms of Reliance Industries, English football club Manchester City has partnered with Geo Platforms, a subsidiary of the company, where the latter will be the club official's mobile communication network partner in India. This bodes well for Geo. In terms of Pokarna, the US government Department of Commerce ruled that the company's subsidiary Pokarna Engineering Store Limited did not make sales of subject merchandise at less than normal value during the period of review, thereby not violating anti-dumping regulations. So this is a good news for Pokarna. In terms of RHI Magnestia, the board approved acquiring Dalmia OCL from Dalmia Bharat Refractories in share swap, where the company will allot 2.7 crore shares at issue price of rupees 632.5 per share in exchange for 8.25 crore shares. For Keval Kiran Clothing, the company which runs a fashion brand Killer has entered into a strategic partnership board of control with BCCI to become an official partner of the Indian cricket team.
The company, in terms of Mukund, the company has completed sale of 45.94 acres of land in Thane for around 796 crores. For Mahindra and Mahindra, the company subsidiary Mahindra and Mahindra South Africa informed that the step-down subsidiary Mahindra West Africa was dissolved by the Corporate Affairs Commission. That's it from my end. Over to you, Vikas. Thank you, Devang sir. Good morning, everyone. Further news updates are Godrej Property has sold over 1 million square feet of area at the launch of a new project Celeste in its township, Godrej Garden City in Ahmedabad. Pankaj Munjal, promoter Hero Motors, is looking and investing 1,500 crore over the next 3 years to strengthen its play in the burgeoning market of electric vehicle component as developed nation across the world accelerated the shift to zero emission vehicle to allay environmental concerns. Union Telecom Minister Ashwini Vaishnav on Thursday said state-owned BSNL will begin providing 5G services in 2024, and the company has shortlisted a TCS and C-Rod-led consortium for rolling out 4G networks, which will be upgraded to 5G in about a year of placing the order under the contract. IndusInd Bank, British Airways Executive Club, and Qatar Airways Privilege Club on Thursday announced a partnership to introduce a multi-branded credit card powered by Visa. Lastly, Lionsgate and PVR Picture Hollywood studio Lionsgate has partnered with PVR Picture for the rollout of its 2023 theatrical content in India. The partnership will bring to movie goes a lineup of titles which include Plane, John Wick, and Chapter Force and others. Thank you so much.